सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है सारा नू सत श्री अकाल जी वन ऑफ माई वेरी फेवरेट थिंग इज टॉकिंग टू किड्स पता नहीं क्यों मैनू बच्चों नाल गल्लां करनियां बहुत ही अच्छियां लगदियां एंड मोस्टली आई थिंक जिवें असीं शो ते भी बड़ी बारी गल करदे हां एज अ पेरेंट एंड एज यू नो जोड़ा मेरा हैगा थोड़ा जिहा ऑब्जर्वेशन करनी और ट्राई टू ऑलवेज ट्राइंग टू सी कि ओके की चल रहा है इन्हां दे दिमाग विच आर वी डूइंग द राइट थिंग्स ऑफन असी अपने प्रोग्राम भी गल करते हैं कि पेरेंट्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो वो कर रहे हैं कि वो ठीक बैठ रहा है वी ऑल वांट कि बच्चे प्रोडक्टिव हैप्पी यू नो दे शुड डू गुड इन लाइफ सो किस तरह पता लगे कि जो भी असी कर रहे हैं इज इट एडिंग टू इट और कोई चीज़ असी ऐसी कर रहे हैं जिहड़ी कि उन्होंने यू नो जिहड़ी उन्हां दे ग्रोथ विच डेट्रीमेंटल होए सो देयर आर सो मेनी वेज टू कीप ऑन यू नो ट्राइंग दिस कि हाँ जी असी इस तरह पता करने की कोशिश कर रहे हैं बट माई फेवरेट वे इज टॉकिंग टू किड्स एंड मैं बड़ी बार ये करती हैं पर अज मैं तुहानू पीकिंग करन दे रही हाँ कि जो मैं गल्लां कर रही हूँ तुसी भी सुन सको कि मैं कुछ बच्चों नाल गल्लां कर रही हाँ सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू to my very favorite kids. This is Jaskaran Singh Sani. Okay, and this is Karan Aluwalia. This is Arvind Kaur-Mehar, and incidentally, she's my daughter. Shakal mildi hai? I don't know. But वैसे, this is my daughter. I often talk about her, I know. But बच्चों, सत श्री अकाल to everyone. Thank you for coming here. सत श्री अकाल. हाँ जी. बच्चे वी आर ऑलवेज एज पेरेंट्स थिंकिंग कि असी यू नो थोड़े वास्ते हेल्पफुल होइए थोड़ी ग्रोथ वास्ते तुसी किस तरह कर रहे हो यू नो वी वांट टू डू आवर बेस्ट यू नो दैट वी ऑलवेज ट्राइंग पर ऑफ कोर्स पेरेंटिंग इज टफ जॉब सो असी ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो सानू थोड़ा जाना वी वांट सम फीडबैक फ्रॉम यू गाइज सो व्हाट डू यू थिंक कि असी तुसी लोग एट दिस पॉइंट स्ट्रेस टेंशन कंसर्न सब तो ज़्यादा डोमिनेट किहड़ी चीज़ तुहाडे दिमागां 'च अजकल करदी है जिवें फॉर एग्जाम्पल एज अ पेरेंट सानू बच्चे की करनगे जॉब च की करना है यू नो घर दा ग्रोसरी पानी है रोटी बनानी है ऑफिस दा अगर यू नो काम है तो ओदा काम हुंदा है तुहानू सब तो ज़्यादा माइंड विच की चलदा है यू नो जसकरण वुड यू लाइक टू आंसर दिस हाँ जी एक्चुअली होने वास्ते बेसिकली स्कूल ज़्यादा यू नो फोकस सारा स्कूल ते ज़्यादा जाता है क्योंकि यू नो वी साढ़े पढ़ाई है कि एग्जाम यू नो सारा कुछ है तो फिर यू नो प्रेशर भी पैंदा पेरेंट्स वालों की पढ़ाई करो अच्छे ग्रेड्स लाओ कुछ बनो So a bigger part of your concern is what goes on in school. जी Other kids, do you agree with him? How about you, Karan? I'm not so concerned with school, but my parents are. Okay. Yeah. Many times this happens. Yeah. So you are concerned about what? I'm not really concerned about school. Like, I'm fine with it, and I go to school every day. But other than that, as long as I like pass, I'm fine with school. So, but my parents feel otherwise. Like, always like do the best that you can, and I understand that because that's what parents are supposed to do. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ you know what dominates in your mind if this is just fine for you anything else you are really you know I just like try to enjoy myself, you know, because it's about like keeping yourself happy. If you don't like what you do, then there's no point in going along with what other people say you should do. Okay, cool, very good. So you're trying to enjoy yourself. Yes. That's your main मतलब सारी लिस्ट जो ऊपर तेरे वो हैगा Yeah. Perfect. Definitely. What do you think, Harmehir, about you know just Karan and Karan's answers? I agree with them completely, but I think that they like interact with each other a lot. Like when you enjoy yourself, your schoolwork comes out really well too. So enjoying yourself comes first. Like be happy with whatever you do. खुश रहो कि कुछ भी कर दे हो बस खुश रहो in whatever you do, and everything just follows along after that because you're happy and your schoolwork becomes better and everything.
ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ I mean most part of the day ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ Of course, school. of course school We're there for most of the day. Right, So it's just, but I come, that's practically, and then you go home and it's homework. So Right. it's most of our day. It's just work. So, and you are, I mean, for her Meher, I can say she is doing very well in middle school and she's going to a very good school, high school in New York. Same is with Karan and same is with just Karan. So, thanu ki lagda hai ki, you know, all parents and kids want to do good, na? पर क्यों होता है कि कई अच्छा कर रहे हैं कई नहीं कर रहे सो डू यू थिंक जिस तरह करण ने क्या कि मैं तो आई एम ओके मतलब ही इज़ ओके बट ही इज़ डूइंग स्टिल वेरी वेल ही इज़ गोइंग टू द बेस्ट स्कूल इन न्यूयॉर्क स्टाइवसन हाई स्कूल सो तुसी की लगता है कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ व्हाट पुट्स इन दैट किमें तुसी उस चीज़ विच कामयाब हो जाते हो यू नो कामयाबियां दी बड़ी डेफिनेशंस है बट राइट नाउ थिंकिंग अबाउट यू मिडिल स्कूल तो एक हाई स्कूल जाना एक अच्छा स्कूल मिलना कामयाबी है डोंट यू एग्री विद मी सो अगर तुसी एक अच्छा स्कूल मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓ ਤੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਕੀ ਹੈ Well, I feel my strengths are basically math and science. Okay. Not really the other subjects. Okay. Though I do enjoy social studies. So yeah. So you score very high in that? Yeah, I do. Do you really have to work very hard and keep on studying, or you know you're naturally smart? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪੇ? What do you think? I don't study that much. I just like naturally take the test, but that's mainly because I don't worry about taking the test and stuff. So my teachers, I bought the Regents practice book. Okay. But I don't really study out of them. They just sit on my shelf. Okay. ठीक है. So are your teachers happy with you what you're doing, or your parents are happy along the course? ठीक है, मिलते गई admission. But do you think along the course, along your year, were they happy with you? They knew कि इन्हें तो कर ही लेना है कि they had some doubts? Well, my teachers felt that I would get in, but they were worried about my behavior-wise. My teachers were like, "Are you sure that you'll stay in Stuyvesant because of your behavior?" What kind of behavior? मतलब किस तरह तुसी अपने can you explain a little more? What did they have problem with? What kind of behavior? Paying attention to the teacher, not getting distracted in class, mainly stuff like that. So are you regular in your homeworks and all? Yeah, You are. yeah. So okay, what about you, Jaskaran? How are you, like, do you think since you are doing very well academically, what is your strength? Actually, मैं हाले ते honors classes ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ mostly science the math ਵਿੱਚ honors classes ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ Okay. I'm doing reasonably well, you know, I'm going to a good program ਅਗਲੇ ਸਾਲ in math ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ program ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ science ਵਾਸਤੇ ਵੀ same ਹੈਗਾ I'm doing very well but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ like ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ like main focus Right. I think school ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ social life ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ which you know question you know so social life ਵੀ ਇੱਕ big ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ for Doing well. middle school high school ਬੱਚੇ ਦੀ life ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ. ਤੇ ਫਿਰ you know ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in the middle of classes or during a class ਕੋਈ you know ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ you know that's a part of So in a way you all are agreeing that having fun, having a little bit of social life and doing hard work. and education is also So necessary. that is your recipe. What do you think? Anything else, Harmekir? What is your recipe for getting into a very good high school in New York? Because many people, many kids try to do that. You know, they asi saraf, you know, we want to see as parents ke sanu bhi dasso kehdi cheez hai jehdi which works. So I try not to worry, well, how Karan said, but not like completely just stop worrying. You at worry, all. you used to. Yeah. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ and that
sort of helped me now because I realize that that's a bad thing because it sort of like have a negative reaction and sort of be bad to worry that So much. कद तक will you explain us के सानू दसोगे कदों तक फिक्र होने से मैंने पता है I want like second third grade or I think it was when I got into middle school that I realized that it was better because it was like a new school and it was like start new, and I tried to just not worry. I thought I didn't care about like the ending grade, like oh getting 100, getting like a 99 or like anything like that. Just like do your best, how well you can do, you know that yourself, and then just see what happens afterwards and don't fret so much about what comes out in the end. So Edenali, I really want you to tell all of us that Indian kids are doing better than others. बहुत बारी, you know, demographically also it has been proven. Even President Obama has repeatedly said, you know, he says in his speeches that why Indians are doing better, why Asians are doing better. So why do you think? Is it parents that which koi role hai? Think about it. I am just going to take a small commercial break and coming back.